जी, तो एंगल्स के टॉपिक में हमें सबसे पहले ये देखना है कि एंगल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, एंगल कैसे बनता है। ये जो लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, इनको हम आर्म्स ऑफ एंगल बोलते हैं। These two lines are called arms of the angle. और जिस पॉइंट पर इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, this point is called vertex of the angle. Acute angle वो सारे angles होते हैं which are less than 90 degrees. और इसी तरह अगर एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो फिर वो राइट एंगल कहलाता है। फिर अगर एंगल 90 से ग्रेटर हो जाए तो उसको फिर हम obtuse एंगल बोलते हैं। obtuse एंगल्स आर द एंगल्स which are greater than 90 डिग्री। और साथ साथ इसमें एक कंडीशन ये होती है कि ये एंगल 180 से लेस रहते हैं। ओके, एक और टाइप जो कि इसके बाद है वो कहलाती है रिफ्लेक्स एंगल्स। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल ये वो एंगल्स होंगे जो कि ग्रेटर देन 180 डिग्री होते हैं। और अगर कोई एंगल एग्जैक्टली 180 के इक्वल हो जाए तो वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। तो फर्ज करें कि अगर सारे एंगल्स के लिए ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है मेजरिंग, तो जो एक्यूट एंगल होगा वो लेस देन 90 होने की वजह से ना इस तरह नजर आएगा। इक्वल टू 90 का एंगल इस तरह से होगा, ग्रेटर देन 90 का एंगल ऑब्ट्यूज एंड लेस देन 180 इस तरह से शो होगा, और ग्रेटर देन 180 का एंगल इस तरह से ग्रेटर देन 180 पे शो होगा। और जो स्ट्रेट एंगल होता है उसमें इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल वो मिलता है 180 का, जो कि स्ट्रेट एंगल कहलाता है। ये है एंगल की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइजेस, जिसमें हम 90 और 180 से कंपेयर करके उनकी टाइप्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। ओके, अब आपके पास एडजेसेंट एंगल्स, इसमें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? तो आपके पास दो एंगल्स बनेंगे, उनका वर्टेक्स और एक आर्म उसमें से कॉमन होगा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से एक लाइन हो सकती है, और इस लाइन पे मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन। अब इसके ऊपर मैं एक और लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं इसके ऊपर एक और लाइन इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो आपके पास अब दो एंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। एक एंगल ये वाला बन जाएगा और एक एंगल आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। अब अगर हम देखें कि ये जो दोनों एंगल्स फॉर्म हुए हैं, अगर इसको एंगल ए कहें और इसको एंगल बी कहें, तो एंगल ए के लिए ये भी एक आर्म है और ये इसका सेकंड आर्म है, जिनके दरमियान ये एंगल बन रहा है। और जो वर्टेक्स है वो इसका ये है। अगर इस वर्टेक्स को हम ए कहते हैं तो वर्टेक्स ए पे स्मॉल एंगल स्मॉल ए बन रहा है। अच्छा, बी की अगर बात करें तो बी के लिए एक आर्म ये है, लेकिन दूसरा आर्म उसके लिए भी सेम है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो आर्म है ये एंगल ए और एंगल बी दोनों के लिए कॉमन है। ये एंगल ए में भी है और एंगल बी भी इसी के साथ बन रहा है। साथ साथ हम देखते हैं कि इनका वर्टेक्स भी कॉमन है। वर्टेक्स ए के लिए जो पॉइंट जिस पे एंगल बन रहा है वो भी कैपिटल ए है, और स्मॉल बी के लिए भी वर्टेक्स कैपिटल ए ही है। तो ये जो दो एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। कि वन आर्म ऑफ द एंगल्स इज कॉमन एंड वन आर्म इज नॉट कॉमन, अनकॉमन, और साथ साथ उनका जो वर्टेक्स है वो भी कॉमन होना चाहिए। तो ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। अच्छा, अब देखें एडजेसेंट एंगल्स में ना तीन तरह के एंगल्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स, जिनको हमें अच्छी तरह नोट करना चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स बाज़ औक़ात सप्लीमेंट्री भी होते हैं,
और सप्लीमेंट्री कब होंगे? जब आपके पास दो एंगल्स मिलकर इस तरह हो कि उनका सम 180 डिग्री आ रहा हो। सो जैसे कि यहाँ पर है, एंगल ए और एंगल बी को अगर हम ऐड करेंगे तो एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का बन जाएगा। इट मीन्स कि ये यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं दोनों। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, इस सिचुएशन में देखें, आपके पास एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल ये वाला बन रहा है, और दोनों के लिए हम देख सकते हैं कि एक आर्म कॉमन है। साथ साथ जिस वर्टेक्स पे ये एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स भी दोनों के लिए कॉमन है। अगर मैं इसको एंगल सी कहूँ और इस एंगल को हम डी कहें, तो अब की दफा हम देखें तो एंगल सी और एंगल डी दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है। तो इन एंगल्स को फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। These are complementary angles. When the sum of two angles is equal to 90 degree, they are called complementary angles. Okay. Third important point इसमें ये है कि the sum of adjacent angles around a point or at a point is always 360 degree. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से एंगल्स बनाना शुरू करते हैं। तो एक एंगल हमने यहाँ पर ये वाला बना लिया, फिर इसी का मैं एक एडजेसेंट एंगल ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एंगल ये बन गया, फिर मैं एक और एंगल बनाता हूँ, यहाँ पर ये एंगल बन गया, और जो लास्ट एंगल बना वो इस तरह से बन गया। अब इस केस में 4 एंगल्स हो गए, किसी केस में 3 हो सकते हैं, किसी केस में 2 एंगल्स भी हो सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि जो आपकी स्टार्टिंग लाइन थी, अगर आप एंगल्स फॉर्म करते हुए वापस उसी लाइन पर पहुंच गए तो जितने भी एंगल्स आपने लिए हैं इन सब का जो सम होगा वो हमेशा 360 डिग्री आएगा। यानी 1 कंप्लीट रोटेशन का जो एंगल बनता है उसी तरह से ये एंगल फॉर्म हो रहा होगा। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्रीज। ये भी एडजेसेंट एंगल्स की एक खास फॉर्म है जो कि हमें याद होनी चाहिए। तो एडजेसेंट एंगल्स में अगर किसी एक पॉइंट के अराउंड हम सारे एंगल्स को ऐड कर दें, मैच कर लें, तो उनका सम हमेशा 360 डिग्रीज आएगा। ओके, एंगल्स की एक और टाइप है जो कि कहलाती है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आर्म ऑफ द एंगल कॉमन नहीं होगा कोई भी, लेकिन वर्टेक्स कॉमन होगा। तो फॉर एग्जांपल हम इसको यूं देख सकते हैं कि फर्ज करें हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसी तरह से एक लाइन हम यहाँ पे कंसिडर करके और भी ड्रॉ कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये सेकंड लाइन हो गई। अच्छा, अब इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ एंगल्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना 2 एंगल्स बनाता हूँ। एक एंगल मैं ये वाला फॉर्म कर रहा हूँ और एक एंगल मैं ये वाला फॉर्म कर रहा हूँ। ये जो एंगल्स, 2 एंगल्स मैंने बनाए हैं, ये कैसे एंगल्स हैं? तो ये असल में जो 2 एंगल्स थे ना जो अभी मैंने ड्रॉ किए हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स, और सिंस दे आर फॉर्मिंग स्ट्रेट एंगल तो इस वजह से इनका सम 180 आ रहा है। लेकिन जो बात हमें नोट करनी थी वो ये कि बोथ द एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स एंड वन ऑफ द आर्म ऑफ द 2 एंगल्स इज कॉमन, तो इट मींस दे आर एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अब मैं एक और यहाँ पे ना एंगल ड्रॉ करता हूँ और उसको हम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये एंगल कौन सा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक एंगल सी बना देता हूँ। नाउ आर एंगल्स एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल सी, आर दीज 2 एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स? ये वाले जो एंगल्स हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ पर अब इसकी बाय डेफिनेशन अगर हम इसको देखें
तो इनमें एक वर्टेक्स कॉमन है, ठीक है, ये वर्टेक्स दोनों में कॉमन है। एंगल ए के लिए जो दो आर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं, और एंगल सी के लिए जो दो आर्म्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए. So since these two angles have a common or shared vertex, but their arms are not common, so they are vertically opposite angles. Vertically opposite angles का relation ये होता है कि they are always equal to each other. Okay? और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक एंगल बनाता हूँ एंगल B, और यहाँ पर एक एंगल बना देता हूँ एंगल D, तो एंगल B will be equal to एंगल D because angle B and angle D are also vertically opposite angles. ठीक है, तो जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वो फॉर्म होंगे, और जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो आपस में हमेशा इक्वल होंगे, यानी एंगल ए और एंगल सी, these two angles are equal, and angle B and angle D, these two angles are also equal. अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में जो टाइप्स हमें देखनी है उसमें फर्स्ट टाइप जो है ना, ये होती है स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल के अंदर आपके पास कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती. ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, और हम कहते हैं कि साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. एनी ऑफ द साइड इज नॉट इक्वल टू एनी अदर साइड. तो इट मीन्स कि ये वाली जो ट्राइंगल होगी ये स्केलिंग ट्राइंगल कहलाएगी. अच्छा, इसी तरह से एक और ट्राइंगल होती है विच इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये वो ट्राइंगल होती है विच हैज टू इक्वल साइड्स, और one of the side is not equal to the other two sides. So this triangle is called isosceles triangle. अच्छा, अब देखें स्केलिन ट्राइंगल जो होती है ना, उसमें एक और बात भी इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं साथ साथ अभी यहाँ पे बता देता हूँ, और फिर ये आगे हम एंगल्स वगैरह में इसको ज़्यादा डिटेल में यूज़ करेंगे. वो ये कि दिस साइड is different from the second side in length, and the first two sides are different in length of from this third side. For example, हम consider करते हैं कि this is the smallest side, then this side is larger than the smaller one but lesser than the largest one, और जिसमें मैंने three lines लगाई हैं, this is the largest side. So using this information we can predict something about their angles also. For example, if I make an angle over here, if I draw an angle over here, इस एंगल के बारे में हम क्या बता सकेंगे? साइड्स की लेंथ के बारे में ये इंफॉर्मेशन रखते हुए कि ये तीनों डिफरेंट साइजेस की हैं, और इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सी है और लार्जेस्ट कौन सी है. तो जो एंगल मैंने यहाँ में ब्लू में ड्रॉ किया है, इस एंगल के बारे में आप क्या बता सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि ये एंगल इस ट्राइंगल का स्मॉलेस्ट एंगल होगा, and why this angle will be the smallest angle of the triangle? Because it is opposite to the smallest length of the triangle. जो एंगल स्मॉलेस्ट लेंथ के ऑपोजिट होगा वो बाकी दो एंगल्स के मुकाबले में लेसर होगा. एंड if I draw an angle here, इस एंगल के बारे में हम क्या कह सकते हैं? This angle would be the largest angle of the triangle because it is opposite to the largest side of the triangle. Okay, so size of the triangle, size of the length of the triangle, उससे हमें एंगल के बारे में भी प्रिडिक्ट करने में हेल्प होती है. अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम फर्दर यूज करते हैं. For example, in an isosceles triangle, I tell you that these two lengths are equal. These two sides are equal in length, and the remaining third side is not equal to them. So this triangle is an isosceles triangle. If I draw an angle here, and if I draw another angle here, how can I relate these two angles? Yes, both angles will be equal to each other. And the reason is that they are opposite to equal sides of the triangle. When two sides of a triangle are equal,
the angles opposite to these two sides will also be equal. So an isosceles triangle, it has two equal sides. It means that it also has two equal angles, which are opposite to the equal sides of the triangle. And the third remaining side, it would have a different angle opposite to it. The third side is equilateral triangle. And this equilateral triangle has all equal sides. All the sides of this triangle are equal to each other. So if I draw a triangle here, and if I tell you that all the sides of this triangle are equal to each other, what can we predict about the angles of this triangle? All the angles would be equal to each other. And since the sum of angles in a triangle is always equal to 180 degrees, so three equal angles giving the sum of 180 degree has only one form, that every angle should be equal to 60 degree only. So this angle will be equal to 60 degree. This also would be a 60 degree angle. And the third one, it is also going to be a 60 degree angle. These are the types of triangle according to the lengths of their sides. Another way of classifying the triangles is using their angles. One of the types of triangle is called acute angle triangles. All angles are less than 90 degree. That is why this triangle is called an acute angle triangle. Another type is called right angled triangle. And what is a right angle triangle? One angle is equal to 90. That is a more accurate definition of right angle triangle. So any one of the angle is equal to 90 degree. And we know since the sum of the angles is going to be 180 degree, so other two angles must be less than 90 degree, and they must be in such a way that their sum is going to be 90 degree. The third type of triangle is called an obtuse angled triangle. Obtuse angled triangle. So this triangle would have one angle which will be greater than 90 degree. So this angle is greater than 90 degree. That is why this triangle is being called an obtuse angled triangle. Now, the next thing is about the exterior angle of a triangle. There is a property related to the exterior angle of the triangle. This is a triangle. If I say this angle is angle A and this angle is angle B, then there would be a third angle, and all these three angles are interior angles of the triangle because they are being formed inside the triangle. Now, if I extend this side further so that it continues after the triangle, beyond the triangle, then the angle formed here, this angle is not an interior angle for the triangle because this is being formed outside the triangle. So this angle is called an exterior angle. And the property related to this exterior angle says that this particular exterior angle will be equal to the sum of non-adjacent interior angles of the triangle. So what is the adjacent angle of this exterior angle? This angle, which I have drawn in red, it is the adjacent angle of this exterior angle, and it is the adjacent interior angle. Why it is adjacent? Because both of the angles have same vertex, and one of the arms of the angle is common between them, shared between them. So these two angles, if I call it a D, then angle C and angle D, these are adjacent angles. The property says we need to consider non-adjacent interior angles. So the other two angles, which are angle A and angle B, are non-adjacent for this exterior angle C.
And the property says that if you add these two non-adjacent interior angles, the sum of these two angles will be equal to the exterior angle, angle C. The definition of parallel lines is two lines are called parallel lines if they have same direction and they never intersect each other. So they will be called, these two lines will be called parallel lines. Like I have drawn two lines, both of them are horizontal lines. And these two horizontal lines are in the same direction. And since they will never intersect each other, so these two lines are called parallel lines. So transversal is the line which intersects two parallel lines. This line is called a transversal. Okay, when a transversal intersects two lines, some angles are formed. One vertex for the formation of angles is this point where the transversal is intersecting a line, and the other vertex for the formation of angles is this one. Okay, so there are three types of angles which are formed here. Although there are four types, but one of the types we have discussed before, and it is not particularly related to parallel lines, which are vertically opposite angles. So an angle is formed here, and the angle which is formed here, these two angles, let me call it angle A and angle B. These two angles, angle A and angle B, these are called alternate angles. And these alternate angles, angle A and angle B, will always be equal to each other. Alternate angles are always equal to each other. Similarly, a second pair of alternate angles can be drawn here. For example, if I draw an angle here, this is angle C. And if I draw another angle here, and I call it angle D, then angle C and angle D, they will also be alternate angles, and angle C will be equal to angle D because these two angles are alternate angles. So how can we define alternate angles? So their vertices will be different. They will not be formed at the same vertex. सही है, इससे पहले हमने दो केसेस देखे हैं. ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना, ये एक ही वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहे थे, और जो एडजेसेंट एंगल्स हमने देखे थे वो भी एक ही वर्टेक्स पे फॉर्म होते थे. बट इन केस ऑफ alternate angles, the vertices at which the two alternate angles are formed or drawn, the vertices are different. If I call this vertex as A and this vertex as B, तो एक alternate angle vertex A पे बनेगा तो दूसरा A पे नहीं बनेगा, वो किसी और vertex पर बनेगा, यानी वो vertex जो उसके parallel line पे बन रहा होगा transversal के साथ. Secondly, what about the arms of angles? One arm is common, and it is very similar to the thing which we discussed in the case of adjacent angles. They also had one arm as common arm. लेकिन वहां पर और यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि वहां पे vertex सेम होता था, but here the vertices are different. अच्छा, एक और बात आप मुझे बताएं कि since one of the arm of the angle is non-common, is uncommon, but what can we say about that uncommon arm? Like angle A का ये वाला एक arm है which is not common with angle B, और इसका ये वाला एक arm है, they are parallel, और जो common arm है उसको मैं orange से highlight कर रहा हूँ. तो orange वाला arm तो दोनों में common था, and we noted it here that one of the arm is going to be common in these two angles. And the non-common arms, they are going to be always parallel. So wherever these three conditions are fulfilled, the angles formed will be alternate angles. What are the three conditions? Number one, the two angles formed will have a different vertex with different vertices. Secondly, one of the arm of the angles will be common. And third, the non-common arm or uncommon arm will be parallel.
Suppose we have an angle here, and this angle we call it as angle A. And then we have another angle here, and we call this angle as angle B. So can angle A be equal to angle B? So the answer is yes, they are equal to each other. लेकिन reason क्या है? How can we prove these two angles are equal to each other? तो अगर मैं यहाँ पर आपके लिए एक angle draw करूँ, what about angle A and angle C? Are they equal to each other? Yes. These two angles are, since they are alternate angles, so these two angles are going to be equal to each other. Yes. So angle C is equal to angle B. So they are vertically opposite angles, and since they are equal to each other, and angle C is also equal to angle A. So angle A and angle B, they also can be equated here. And the name for this sort of angles is, they are called corresponding angles. Okay, so angle A and angle B, these two angles are equal to each other, and these two angles are called corresponding angles. Now, as we saw in the case of alternate angles, we can see here a Z type of figure is formed. Okay, and in case of corresponding angles, it is said that a sort of F is formed. So if I consider these two angles, this angle, and let me call it angle D, and an angle here, which I can say it is angle E. So angle D and angle E, these two angles are also going to be equal to each other, and these are also corresponding angles. And if we see here, a sort of F is formed here. So the angles related to shape of alternate angles, a shape of Z is formed here. और अगर हम corresponding angles की बात करेंगे, a sort of F is formed. I'm drawing an angle here, and this angle is angle A, and another angle, I'm drawing it here, this is angle B. How these two angles are related to each other? I'm told the sum of these two angles will be equal to 180 degree, which means that these two angles are sort of supplementary angles. Although directly हम इनको supplementary angles की तरह नहीं देख सकते, but there can be two ways of relating these two angles. Okay. So let me first relate them with the help of an alternate angle. For example, if I draw an angle here, the alternate angle of angle B, it will be drawn here. And if I call it as angle C, so angle C and angle A are clearly supplementary angles, because these two angles are such adjacent angles that combining these two angles will give us as their answer as 180 degree. Okay. And since angle C is equal to angle B, so we can write angle B in place of angle C, because angle B is also equal to angle C. So wherever an angle C is written, it can be replaced by angle B, because these two angles are equal to each other. And the other way of relating angle A and angle B can be, if I draw the corresponding angle of B, the corresponding angle of B will be drawn here, and let me call it angle D. And again, angle A and angle D, they can be seen that they are together, they are making supplementary angles, and their sum is going to be 180 degree. And since angle D and angle B are equal to each other, so they can be written in place of one another. So we can also write here angle A plus angle B will be equal to 180 degree. So these two angles, these are interior angles, and their sum is always equal to 180 degree.
Another pair of interior angles, or this type of angles, if I try to draw them here, one of the angles can be drawn here and the other angle will be drawn here. If it is angle E and if it is angle F, then these two angles, these two interior angles, their sum will also be equal to 180 degrees. So there are three types of angles which are related to parallel sides or parallel lines and the transversal. First one is alternate angles, and a shape of Z is formed in this property. The second one is corresponding angle, a sort of F is formed here. And the third type of angles, although they are not equal to each other, but they are related to each other such that their sum is going to be equal to 180 degrees.